वेलकम टू ओडिसी ऑटोमेशन सॉल्यूशन। आज हम डिस्कशन करेंगे CFC प्रोग्राम के बारे में। CFC प्रोग्राम क्या है? CFC मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन चार्ट। सेम लाइक जैसे हम जो फंक्शनल ब्लॉक में जैसे हम प्रोग्रामिंग बना देते, सेम लाइक जैसे हम प्रोग्रामिंग जो एक एक करके हम जितना भी प्रोग्राम जो देखे हैं, देखिए फंक्शनल ब्लॉक बाकी प्रोग्राम के सेम CFC वो है कंटिन्यूअस फंक्शन चार्ट। ओके, देखिए अभी CFC प्रोग्राम लिखने के लिए विंडो ओपन करना है। ओके, फर्स्ट गो टू एप्लीकेशन, ऐड ऑब्जेक्ट, गो टू POU, नेम वेबसाइट CFC। ओके, CFC, सिलेक्ट CFC, add, then go to main tags, right click on it, then add object to program cell, then peer to call, click here, go to application, see CFCG showing CFC, then OK, then add. Here we have to write the CFC language program. Okay, first I'm placing one box here. Okay, first I'm placing here one timer I'm placing. Okay, T on, another one T on, two timers, T on 0, T on 1. This is the global declaration. Okay, see, is the input. Okay, here one input, two input, connector, PT means preset time. Okay, we have to give the time, what time to on the timer. Then this is the output. The light. This is the preset time. We have to give to here what time, in what time the timer will be on. टाइमर को ऑन करने के लिए
हम टाइमिंग सेट करना है, कितना टाइम तक मेरा टाइमर ऑन होना है। ओके, सी टाइमर T01, T02, first step, 1 second, T hashtag 1 second. See, I am given the time 1 second, 1 second. In 1 second, after 1 second, this timer will be on. After 1 second, same, it will be continuous function. Continuously मेरा आउटपुट ब्लिंक होता रहेगा। ओके, देखिए उसके बाद ये एक लाइट दिया है, मैं लाइट बोले properties, variable, go to application, CFC, and the light. Okay. CFC program. Then after writing the program, go to build, generate code. Okay, to error is car. Okay, already there. Light already there. Sorry. See, 0. This is the error finding के लिए. Okay, build build करने के लिए. Okay, then after build, go to online, simulation on already. Okay, then go to online, like go to login. Yes, after login, debug, then start the. See, automatically मेरा लाइट ब्लिंकिंग हो रहा है 1 second से 1 second. After 1 second, this timer is giving the output. Same like same second timer also. After 1 second, it is also giving the output. See, in visualization, this is the SCADA. Here also you can see the how output is
After go to debug, then stop the program, log out. After you have to write the next program. Okay. Thank you.